Good morning, students. So in previous class we have studied about keyboard, which is a input device. Okay. So in today's class we are going to learn about other two input devices. First is mouse and the second one is joystick. So let's get started. Mouse. A mouse is a commonly used pointing device. It fits easily under the palm of our hand. A mouse usually has two or more buttons on the top and a scroll wheel in the center. The way we move a mouse on the mouse pad, the mouse pointer moves in the same direction on the monitor. Most mouse are roller balls or optical type. Okay, so what is a mouse? Mouse is a input device. It is commonly used as a pointing device. So on the monitor screen you can see a pointing arrow like thing. Okay, that arrow is moved with the help of a mouse. So mouse is commonly used pointing device. Okay, so you can see the picture of a mouse. It easily fit under the palm of our hand. This is the palm of our hand. This is palm, this thing. Okay, so we can hold the mouse like this and we can move it easily. So it fit easily under the palm of our hand. Okay, so a mouse has two or more buttons. So here a mouse has two buttons, here and here. Okay, and a scroll wheel in the center. This is the scroll wheel. Okay, you can scroll up and down with the help of this scroll wheel. The way we move the mouse on the mouse pad, the mouse pointer moves in the same direction on the monitor. So this mouse is kept on a pad which is called a mouse pad, and how we move this mouse. Okay, in the direction this mouse moves, the pointer, okay, mouse pointer, it also move in the same direction on the monitor. Most mouse are roll ballers or optical type. So these are the types of mouse. So most mouse are either roll ballers or optical types. यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछली क्लास में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था और उसमें पहला हमने पढ़ा था कीबोर्ड, जिसमें हम टाइप करते हैं और डेटा को जो है डालते हैं कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, आज हम दो और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पहला है माउस. आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो माउस की. ये कॉमनली कहते हैं इसको एक पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, क्योंकि सबके घर में या सबने कभी ना कभी कंप्यूटर का यूज़ किया होगा. तब जो कंप्यूटर पे एक पॉइंटर सा होता है ना, एरो जैसा, ठीक है, उसको मूव करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं. ये माउस जो है इजीली फिट हो सकता है अपनी हथेली में. पाम का मतलब ये जो हाथ की हथेली है ना, इसको हम माउस को ऐसे पकड़ के ऐसे मूव करते हैं तो इजीली फिट हो जाता है पाम के अंदर अपने हमारे हाथों के. ठीक है, अब माउस के अंदर यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली इसमें दो या दो से ज़्यादा भी बटन हो सकते हैं. ऊपर, टॉप का मतलब ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, और एक क्या होता है स्क्रोल व्हील. ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये स्क्रोल कर सकते हैं, इसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो एरो होगा आपका मॉनिटर के ऊपर जो दिख रहा है वो भी आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकता है. ठीक है, तो आपको स्क्रोल व्हील दिखेगा एक माउस के अंदर और यूजुअली दो या दो से ज़्यादा बटन ऊपर की तरफ दिखेंगे. ठीक है, अब माउस को किस में रखा जाता है, माउस पैड के नीचे. जैसे माउस होता है, ठीक है, उसके नीचे एक पैड होता है जिसको हम कहते हैं माउस पैड. ठीक है, और माउस का पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. मॉनिटर का मतलब जो स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की, उसको मॉनिटर कहते हैं. उसके ऊपर माउस पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जैसे आप इस माउस को मूव करोगे. ठीक है, जैसे आप माउस को मूव करोगे माउस पैड पे, वैसे ही माउस पॉइंटर मूव करेगा मॉनिटर के ऊपर.
मोस्टली माउस दो टाइप के होते हैं, मोस्टली ऑप्टिकल टाइप और एक होता है रोलर बॉल टाइप्स, ठीक है। A ball mouse has a ball present underneath the mouse that rolls as the mouse moves. The cursor on the screen of the monitor follows the movement of the mouse. So a ball mouse has a ball present underneath. Underneath means below. So if you turn this mouse, okay, so you will find a ball underneath it, below this mouse, okay, which can roll on the mouse pad, okay, and the cursor on the screen of the monitor follow the movement of mouse. So wherever this mouse move, okay, in that direction the cursor is a arrow like thing on the screen or on the monitor which is moved with the help of this mouse. So on the monitor cursor is there, so cursor on the screen of the monitor, it follows the movement of the mouse. Wherever this mouse moves, the cursor move in the same direction. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बॉल माउस जो होता है उसके अंदर एक बॉल प्रेजेंट होती है, उसके अंडरनीथ का मतलब नीचे। जैसे आपने इस माउस को जो है उल्टा कर दिया तो उल्टा माउस है ना ये, इसके नीचे जो है आपको एक बॉल दिखेगा, ठीक है, जो रोल हो सकता है, जो क्या हो सकता है, रोल हो सकता है। जैसे जैसे माउस मूव करेगा वैसे वैसे ये घूमता रहेगा। रोल का मतलब घूमना, अंडरनीथ का मतलब नीचे। और जो कर्सर आप मॉनिटर में देख रहे हो, कर्सर कैसा होता है, वैसे तो हम कर्सर का सिंबल चेंज कर सकते हैं बट जनरली एरो टाइप का होता है जो हम मूव करते हैं मॉनिटर के ऊपर। कैसे मूव करते हैं, माउस को मूव करके। तो जैसी मूवमेंट का मतलब जैसी चलेगा माउस, ठीक है, वैसे ही आपके मॉनिटर पे कर्सर भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये हमारा पहला दूसरा इनपुट डिवाइस था माउस, जिसको कॉमनली यूज्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस की ये पिक्चर है और अगर हम उल्टा करते हैं तो बॉल माउस के अंदर एक बॉल भी दिखाई देता है। नाउ कमिंग टू जॉयस्टिक्स। सो जॉयस्टिक, a joystick is also a pointing device. It is also a pointing device just like a mouse. Mouse is a pointing device, joystick is also a pointing device, okay. It can be moved at different angles to change the direction of the device it is controlling. People use joystick to play games on the computer. A joystick has many buttons which can be used to give inputs to the computer. And this is the picture of joystick. So this is the picture of joystick, okay, and this is the handle of joystick which can be moved in different directions. So joystick is also a pointing device. How can we change the direction of that device? Okay, by moving this joystick in different direction. If we move this joystick at different angles, it will change the direction of the device which it is controlling, okay. The device which this joystick is controlling will change the direction whenever we move this joystick at different angles. Now where you can see a joystick, for example if you have video games, okay, so in that also joystick is used. So people use joystick to play games on computer. So if you want to go left, right, up, down, so you can use this joystick, okay. And joystick has many buttons also, you can see here, which is also used to give input to the computer. So by moving this handle, you can move the device which this joystick is controlling, and it has many buttons. With the help of this you can give input to the computer, okay. तो joystick हमारी दूसरी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। अगर आप जॉयस्टिक को डिफरेंट एंगल्स में मूव करोगे तो जो डिवाइस जिसको ये जॉयस्टिक कंट्रोल कर रहा है वो भी अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता रहेगा, ठीक है। जॉयस्टिक का कहाँ यूज़ होता है, लोग गेम खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स वगैरह,
तो आपने देखा होगा एक ऐसा ही कुछ होता है जिसके ऊपर भी बटन होता है और वो इसको लेफ्ट राइट आगे पीछे घुमाते हैं। तो जो वीडियो गेम्स में जो आदमी होता है वो भी आगे पीछे लेफ्ट राइट भागता है, ठीक है। तो लोग जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए। जॉयस्टिक के अंदर बहुत सारे बटन होते हैं, जैसे ये देख लो बटन है, यहाँ पे ऊपर भी है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप इनपुट दे सकते हो कंप्यूटर में। कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो भी दे सकते हो। अब यहाँ पे फैक्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट हैव जॉयस्टिक्स टू, अ पायलट यूजेस अ जॉयस्टिक टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ द प्लेन, joysticks are also used to control the working of machines like cranes and trucks. So joysticks, other places where joysticks are used, they are used in aircrafts, okay. They are also used in machine like cranes and trucks, okay. It is very heavy machine, so here also joystick is used and it controls the machine and it also controls the flight of the plane. तो जॉयस्टिक का और कहाँ यूज़ होता है, हवाई जहाज में, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है जॉयस्टिक का। जो हवाई जहाज को चलाता है उसको पायलट कहते हैं। तो पायलट जो है अपनी प्लेन को कंट्रोल करने के लिए इस जॉयस्टिक का यूज़ करता है जो प्लेन में अटैच्ड होता है। और कहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं जैसे क्रेन्स है, ट्रक्स है, उसमें भी कभी कभी अटैच्ड होता है जॉयस्टिक, जो कि उसकी कंट्रोलिंग को जो है कंट्रोल करते हैं इन मशीन्स को, ठीक है। तो ये भी आपकी हमारी एक इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक, जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख रहे हो। सो टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डू दिस पेज नंबर 19. I hope you understood today's class. Please read page number 19 and we will continue the chapter in our next class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.